Good morning, children. And how are all of you? I think you all are fit and fine, and you all are in good health, and also you are very happy. I hope that you all are very happy and feeling happiness, and also feeling full of enthusiastic and full of new hopes and desires. And with new aspirations, new desires, and new hopes, let's start the explanation. Let's start the lecture of today's. Children, as you know that we have started the explanation of the chapter from pro section, and so in previous lecture we have already done some of the explanation of some of the paragraphs. So we will continue the chapter in today's lecture, and I hope that we will finish the chapter in today's lecture. So children, let's start the explanation of the remaining paragraphs of that chapter, and let us finish the chapter in today's lecture. So let's start the explanation. So children, let's start the explanation of the paragraphs which are left. Children, we have left on that paragraph, we have done up to the paragraph when the daughter of the narrator thanked him by giving him cards which was showing gratitude and thanks to her daddy. So we have done up to that paragraph when Suzanne, his daughter, thanked him, and she has shown her gratitude and thanks to her daddy, and then this made the narrator realize that they had to make it to the island. That means this made the narrator realize that he had to reach that आइलैंड. मतलब कहने का है कि जब सुई ने, हमने उस पैराग्राफ में तक किया था बच्चों, जबकि जब उनकी नरेटर की, मतलब ऑथर की, जो या नरेटर की जो बेटी थी, डॉटर थी सुजान, उसने अपने हाथ से बनाकर कार्ड शी हैज़ गिवन, उन्होंने दिया, सुजैन ने अपने डैडी को एक बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड जो है वो बना के स्केच करके दिया, जिसमें उसने अपनी ग्रैटिट्यूड और अपना जो है वो थैंक्स जो है वो शो किया. और फिर उसके बाद दिस मेड द नरेटर रियलाइज दैट दे हैड टू मेक इट टू द आइलैंड. Now let's continue the explanation of the paragraph. I checked and rechecked my calculation. We had lost our main compass, and I was using a spare which had not been corrected for magnetic variation. I made an allowance for this and the another, estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean. Now about 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees. If we were lucky, I told him with a conviction I did not feel he could expect to see the island at about 5 p.m. Now then with heavy heart, I went below, climbed on my bunk, and amazingly dozed off. When I woke it was 6 p.m. and growing dark. I knew we must have missed the island, and with the sail we had left, we could not hope to beat back into the westerly winds. And then at that moment, a tousled head appeared by my bunk. Can I have a hug? Jonathan asked. She was right behind him. Now the difficult meaning, see the tousled hair means disarranged hair of narrator's son Jonathan. Tousled hair means कि disarranged मतलब जैसे बाल आपके ऊपर बिखरे हुए हों, और the hair of the narrator's son was not in orderly form, यानी properly वो combed नहीं थे. That was called tousled hair. Bunk is here bed, and dozed off went off to sleep. जैसे दो झपकी लेना या सो जाना, dozed off went off to sleep. Now what happened in this paragraph, what author says in the paragraph? In this paragraph, children, the narrator rechecked his calculation.
narrator rechecked his calculation. Now he rechecked his calculations. And why? Because they lost their main compass and were using the spare one, which was not corrected for magnetic variations. मीन्स कहने का मतलब है कि ऑथर इज सेइंग दैट कि वो बार बार अपने कैलकुलेशन की वो जांच कर रहे थे, बार बार कैलकुलेशंस को वो रीचेक कर रहे थे, क्योंकि उनका जो मेन कंपास था, जो कंपास वो था जो कि विच वॉज शोइंग द डायरेक्शन, जो भी मतलब डायरेक्शंस शो कर रहा था, वो उन्होंने खो दिया था। और उनके पास कोई और भी कंपास और एक उनके पास एक्स्ट्रा कंपास था जो कि बहुत ज़्यादा उसमें मतलब ज़्यादा इम्प्रूव्ड नहीं था, वो बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं था। सो व्हाट दे लॉस्ट देयर मेन कंपास एंड यूजिंग द स्पेयर वन मीन्स जो मतलब ऐसी अतिरिक्त मतलब एक एक्स्ट्रा जो था कंपास था, बट विच वॉज नॉट करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। लेकिन जो चुंबकीय यानी जिसको मैग्नेटिक वेरिएशंस में जिससे डायरेक्शन विंड का पता चल जाए, वो इतनी अच्छी कंडीशन में वो शो नहीं कर रहा था। एंड देन व्हाट हैपेंड, ही एस्टिमेटेड what I made an allowance for this and another estimate on influence of the westerly currents. Now what author says that कि the narrator estimated the influence of the westerly currents and which flow through the Indian Ocean. ना इसमें क्या था कि जब ऑथर ने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखा कि जो वेस्ट से बहने वाली जो हवा है, जो मतलब वेव्स है, जो धारा है, जो वेव्स है, जो लहर है, वो जो है किधर से आ रही है, और वो लहर वो उनको समझ में आ गया कि वो लहर जो है इंडियन ओशन से होकर आ रही है। यानी the author estimated, the narrator estimated the influence of the westerly currents which flow through the Indian Ocean. Now around 2 p.m. what happened around 2 p.m.? He went on deck and asked Larry to steer the wheel for 185 degrees. So around 2 p.m. what happened, children? Around 2 p.m. he went on deck and asked Larry. Larry was one of his crewmen. So he asked Larry to steer the wheel for how many degree? 185 degree. How many degree? 185 degree. So he asked Larry to steer the wheel to 185 degree, and then he felt that if they were lucky, they would see the island by 5 p.m. Now what author hoped? Author was hoping. Author ने ये hope किया कि लगभग जो है वो 2 बजे जो है वो डेक पर मतलब डेक वॉज द फ्लोर ऑफ द शिप, डेक पर वो ऑथर नरेटर जाते हैं और लैरी से क्या कहते हैं कि 185 डिग्री की दिशा में नाव चलाने को उन्होंने कहा कि 185 जो डिग्री के डायरेक्शन में जो है वो नाव को जो मतलब बोट को या शिप को जो है वो क्या करें, वो सेल करें। और अब जो था जो अगर बट द नरेटर वॉज होपिंग कि इफ़ दे वर लकी, अगर वो लकी होंगे, अगर उनको डेस्टिनी उनका लक उनका साथ देगा, तो वो कम से कम शाम को 5 बजे वो जो है आइलैंड में उनको आइलैंड दिख सकता है। ही वुड सी द आइलैंड अराउंड बाय 5 p.m. अगर वो लकी होंगे, अगर उनका लक साथ देगा तो वो 5 बजे करीब वो आइलैंड ही वुड सी। देन व्हाट हैपेंड? बट देन ही वेंट ब्लो एंड स्लेप्ट. What? Then he blow and then he went and blow and then he went below and slept. Then what happened? He woke up around 6 p.m. He woke up around 6 p.m. And what happened? Then he woke up around 6 p.m. And then what happened? What he found? Then when he woke up at 6 p.m. and it was dark outside. It was growing dark. And he thought that they might have missed the island. He started worrying about how they would tackle the westerly wind more, as the ship was not capable to sail more. His son came and asked him for a hug, and his daughter followed. Then what happened? Author found. Then author when he woke up at 6 p.m. जब वो 6 p.m. यानी 6 बजे वो उनकी नींद खुली, जब वो जागे तो चारों तरफ क्या हो गया था? ग्रोइंग डार्क, यानी अंधेरा हो गया था। और वो जो है देन ही व्हाट हैपेंड?
और उस जब आइलैंड तक पहुंचने में उनको लगा, द नरेटर वॉज थिंकिंग, द नरेटर थॉट दैट कि अब आइलैंड पर पहुंचने में वो चूक गए, यानी वो मिस कर गए आइलैंड, और मे बी वो आइलैंड जो है वो उनसे पीछे छूट गया, जिसको वो समझ रहे थे कि वो 5 बजे तक उस आइलैंड पे पहुंच जाएंगे. बट ही what happened, but he thought that they might have missed the island. लेकिन उन्हें लगा कि अब वो उन्होंने आइलैंड को जो है वो मिस कर दिया, और अब जो है जो नाव थी उनका जो थी जिस पे वो सेल कर रही थी नाव थी, उन्हें अब क्या था कि उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो वेस्टर्ली विंड के साथ जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वेस्टर्ली विंड जो है वो बहुत हैवी थी, बहुत ही उसका डेंजरस ब्लो था. तो इसलिए he was started worrying. He started what? उनको चिंता होने लगी. He started worrying about how they would tackle the westerly wind more, as the ship was not capable to sail more. अब जो है उनकी शिप जो है इतनी हालत में नहीं थी कि वो आगे और जर्नी कर सके, और वेस्टर्ली विंड के साथ, उस तेज़ हवा के साथ और ज़्यादा जर्नी वो कर सके, या जो है इसलिए वो द ऑथर, द नरेटर स्टार्टेड वरिंग. Then what happened? Suddenly उसका जो बेटा है, then his son came forward and asked him for a hug, and then his daughter also followed him. Now children, let's move to the another paragraph. Now let's see the another paragraph. Why am I getting a hug now? I asked. Because you are the best daddy in the whole world and the best captain, my son replied. Not today, John. I'm afraid. Why, you must be, said Sui in a matter-of-fact voice. You found the island? What? I shouted. It's out there in front of us, they chorused, big as a battleship. I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of Lee Amsterdam. It was only a bleak piece of volcanic rock with the little vegetation, the most beautiful island in the world. And now let's see the difficult meaning of difficult words. Bleak is here an area of land lacking vegetation, यानी वो एरिया जहाँ पे vegetation या घास फूस या herb shrubs नहीं होते हैं. Stark means sharply defined. Now children, what happened in this paragraph? John asked when his son came, and when son asked him to hug, and his daughter also followed him. Then John asked that why he was getting a hug. Then his son replied that he was the best daddy in the world, and also called him the best captain. What his son declared, his son replied to his daddy that you are the best daddy in the world and you are the best captain in the world. Then narrator replied that he was afraid. Then his daughter Sui told him that they had found the island, which was as big as a battleship. नाउ यहाँ पे ऑथर कहता है कि जो है वो उसने पूछा कि तुम मुझे क्यों गले मिल रहे हो. फिर तब कैप्टन यानी नरेटर के बेटे ने यानी सन ने क्या बताया कि यू आर द बेस्ट कैप्टन, यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड. तब फिर उसने कहा कि प्लीज़ जॉन, और फिर उसने कहा बहुत तेज़ से, सुजान ने चिल्ला कर, ये बहुत लाउड वॉइस में उसने कहा कि उसने जो है वो आइलैंड खोज लिया है, यानी नरेटर ने आइलैंड खोज लिया है. Then narrator replied that he was afraid, and Sue told him that they had found the island, which was big as battlefield. Then what happened? Then the narrator rushed to the deck and gave a sigh of relief. तब नरेटर जो है बहुत ज़ोर से भाग कर गया और उसने एक एम्स्टरडैम को बहुत अच्छे तरीके से एक एज पर देखा और राहत की सांस ली. And they could see the complete outline of Amsterdam. उसने देखा कि एम्स्टरडैम आइलैंड जो है उसकी जो है उसका किनारा यानी एज जो है वो दिख रहा था उसको, और वो देखकर नरेटर गॉट relaxation and he felt very relaxed. He was feeling very relaxed to see the edge of the Amsterdam island.
Then what happened? There was a bleak piece of volcanic rock in front of them, and what happened then? It had a little vegetation. Then he found there was a bleak piece of volcanic rock with in front of them, and it had a little vegetation, and it was the most beautiful island in the world. And the author and the narrator came to say, when they came to see the island, then they realized that it was the most beautiful island in the world. यानी जो है वो वहाँ पर जब वहाँ पर उन्होंने देखा कि बहुत ही एम्स्टर्डम को जब उन्होंने दूर से देखा और एक झटके से उनको बहुत ही अच्छे से वो उसको मतलब देख रहे थे ऑथर और उनकी फैमिली, और बस एक रास्ते में उनके कौन हिंड्रेंस था, क्या हिंड्रेंस था? एक वॉल्केनिक रॉक था जो कि उनके रास्ते का जो कांटा था या हिंड्रेंस था। एक बड़ा सा टुकड़ा था ज्वालामुखी चट्टान का, एक बहुत बड़ा सा पीस जो था वो वहाँ पे पड़ा हुआ था उनके रास्ते में इन फ्रंट ऑफ देम, जिस पर बहुत थोड़ी बहुत जो है वो नेचुरल वेजिटेशंस थी, यानी नेचुरल हर्ब्स और श्रब्स और ग्रासेस जो है उसमें उगी हुई थी। और फिर इसके बाद और नरेटर एंड होल फैमिली रियलाइज्ड दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, कि वो आइलैंड दुनिया का सबसे खूबसूरत आइलैंड है। देन व्हाट हैपेंड? And then let's move the another paragraph, children. I think this is the last paragraph of your chapter. Now, we anchored offshore for a night, and the next morning, all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. With land under my feet again, my thoughts were full of Larry and Herbie, cheerful and optimistic under the direst stress. And of Mary, who stayed at the wheel for all those crucial hours. Most of all, I thought of a 7-year-old girl who did not want us to worry about a head injury, which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull, and of a 6-year-old boy who was not afraid to die. There is a very beautiful realization of narrator, and he realized what he realized in the last section of the story, that the author said, let's first see the meaning of the difficult words. Anchored, moor a ship of the sea bottom, यानी जो है bottom sea के bottom निचला हिस्सा. Offshore, situated at the sea some distance. आपने देखा होगा ना कि किसी आइलैंड का या किसी छोर का जो किनारा होता है, दैट इज कॉल्ड ऑफशोर. ashore on the shore of the island, yani edge, near the edge of the island, and optimistic, the full of hopes and confident. Now what author says that they moved the ship at some distance from the shore, and the next morning 28 inhabitants, यानी how many वहाँ के local जो लोग थे वहाँ पे कितने थे, 28 inhabitants of the Amsterdam island helped them to move on the shore, and then as he felt the land again on his feet, he thought of his crewman and his wife. Now when he got the island, when he came to see the island, then he began thinking of his crewman and his wife. He also thought of his 7-year-old daughter who was injured badly, and she had to go through 6 minor operation and to remove a recurring blood operation to remove the blood clot in her head. Then he was also thinking about his son, who was 6-year-old, who never gave up and was not afraid to die. यानी कहने का मतलब है बच्चों यहाँ पर कि जब ऑथर जो था वो जब उसने आइलैंड को देखा तो उसके पैरों तले की ज़मीन जैसे बिल्कुल निकल गई हो, और लैरी और हर्बी के बारे में देन ही बिगैन टू ही थिंकिंग अबाउट लैरी एंड हर्बी, जो उन्होंने मदद की. फिर उसी प्रकार से उसने बहुत ही वो जो हमेशा इतने क्रूशल पोजीशन में भी जो है वो फुल ऑफ होप्स एंड फुल ऑफ डिटर्मिनेशन रहे, फुल ऑफ डिटरमाइंड रहे, एंड टू गेट आउट ऑफ दैट
those crucial situations and circumstances. और फिर उन्होंने मैरी के बारे में सोचा कि किस तरीके से वो क्रूशल कंडीशन में वो व्हील से लगातार व्हील को वो उस पर डटी रही, उस पर लगी रही. फिर सबसे ज़्यादा मोस्टली सबसे ज़्यादा जो है और नरेटर जो है वो अपनी 7 year old गर्ल यानी 7 year old डॉटर यानी 7 साल की जो बेटी थी उसके बारे में सोचा, जो नहीं चाहती थी क्या कि उसकी जो सिर की चोट है उसके बारे में ऑथर को पता चले या ऑथर उसके बारे में वरी करे या चिंता करे. और वो चोट वो इंजरी इतनी ज़्यादा सीरियस थी कि वो 6 छोटी छोटी ऑपरेशंस उसके हुए टू रिमूव द ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड द स्कल. फिर उसके बाद और फिर ही वॉज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट हिज सन, वो अपने बेटे के बारे में भी सोच रहा था जो कि 6 years old था और जिसने डेथ से कभी भी हार नहीं मानी, जो यानी मौत से या डेथ से कभी नहीं डरा. His son who never gave up and was not afraid to die. So all these things. So children, we have finished the chapter. We have finished the explanation in today's lecture. We have finished the chapter. So in next lecture we will start the new chapter from the prose section only. So in today's lecture we stop there, and in next lecture we will start the new chapter from the prose section. So children, take care of yourself and your family, and always be happy and have a great and wonderful smile on your pretty faces. So children, goodbye.